Good morning, friends. Welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. Over the weekend, we saw the US attacking the nuclear sites in Iran. And while last week President Trump had said that he will decide in 2 weeks whether US will participate in the conflict, but now over the weekend, US has struck the nuclear sites in Iran. So post this, however, we have seen that there has been no major reaction from the global markets. तो अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें जो सबसे क्लोजली लिंक्ड है टू एनी टेंशंस इन मिडल ईस्ट, तो ब्रेंट क्रूड सिर्फ 2% ऊपर है एट $78.5 पर बैरल, एंड ये $81 जाके कूल ऑफ हुआ है. तो हमने देखा है कि एक मेजर इम्पैक्ट आता है कभी भी जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन्स आते हैं, बट पोस्ट ये वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बाद एक ज़्यादा मेजर रिएक्शन नहीं है. गोल्ड प्राइसेस आल्सो आर ट्रेडिंग बिलो $3,400 पर आउंस एंड इंडिकेटिंग दैट safe haven demand that normally comes after any major geopolitical event that hasn't been coming in gold. US futures also are indicating just a 0.4 to 0.5% lower start. गिफ्ट निफ्टी भी सिर्फ 90 to 100 पॉइंट्स का एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए, एंड ये अबाउट 140-150 पॉइंट्स डाउन था अर्ली मॉर्निंग में, बट उसके बाद हमने रिकवरी देखी गई है. सो ओवरऑल देयर इज़ अ सेंस दैट थिंग्स विल नॉट एस्केलेट फर्दर. However, things could change over the next couple of days, but markets are of the opinion that they will take each day as it comes and react to the actual event rather than preempting any major moves on the downside. Coming to the stock specific news, so crude sensitives will be in focus. The paints, tires, aviation and oil marketing companies. However, looking at the not so major impact on crude oil, there could be a minor impact, and you could see recovery because these stocks have been reacting to the crude upside news since last week. Coming to the other news, so HAL will be in focus. The company has become a successful bidder for manufacturing and design technology of the small satellite launch vehicle. So this is positive news for HAL. तो कंपनी ने 511 करोड़ में ये टेक्नोलॉजी खरीदी है फ्रॉम इसरो, एंड अब इस टेक्नोलॉजी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो स्पेस में यूज़ होता है, इसकी टेक्नोलॉजी HAL यूज़ करेगा. तो पॉजिटिव है HAL के लिए. IT stocks will be in focus. Accenture reported its Q3 results, which were a beat, and the management also increased the lower band of the guidance. However, the stock reacted negatively on Friday in the US market, but overall expect neutral to positive reaction for IT stocks based on Accenture's results and commentary. Granules India will be in focus. US FDA has concluded inspection at the company's Hyderabad API plant and issued one Form 483 observation. So Granules India will be in focus. Unichem Labs को भी रोहा API फैसिलिटी के लिए 3 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे. डॉक्टर रेड्डीज लैब्स कंपनी को US FDA अप्रूवल मिला है फॉर 2 ड्रग्स, तो पॉजिटिव रहेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए. LT फूड्स में US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है ऑन ऑर्गेनिक सोयाबीन मील फ्रॉम इंडिया. तो ये इसकी सब्सिडरी इकोप्योर स्पेशलिटीज़ को इम्पैक्ट करेगा. ड्यूटी काफ़ी हाई है, तो LT फूड्स फोकस में रहेगा. ऑल्सो बासमती राइस एक्सपोर्ट्स जो ईरान में एक मेजर मार्केट है ईरान, तो ये कन्फ्लिक्ट के चलते एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं, तो LT फूड्स फोकस में रहेगा. HG Infra Engineering company has received a letter of intent from PFC Consulting for establishing interstate transmission system, so positive for HG Infra. Servotech Renewable Power has acquired a 27% stake in Rhine Solar. Bharat Electronics has received additional orders worth 585 crores. This is since its last update on 5th June.
बैजल प्रोजेक्ट्स को एक ऑर्डर मिला है 400 करोड़ का। इंटरैक प्रोजेक्ट्स को एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम एथर एनर्जी फॉर प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर 80 crores। एवेंटेल को ऑर्डर मिला है 14 करोड़ का फ्रॉम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैब एंड ऑल्सो एन ऑर्डर वर्थ 11 crores फ्रॉम मसगांव डॉक्स। NLC India has received an award from Tamil Nadu Green Energy Corporation for development of battery energy storage systems. So positive for NLC India as well. Zen Technologies has announced strategic acquisition of majority stake in TISA Aerospace, so expanding its capability. पॉजिटिव फॉर जेन टेक्नोलॉजीज। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च किया है मॉर्गन हाइट्स एंड इसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 2100 crores, तो पॉजिटिव रहेगा फॉर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। आज न्यू लिस्टिंग की बात करें तो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल एंड फैशन आज लिस्ट होगा। ये डीमर्ज हुआ था फ्रॉम आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एंड ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें मधुरा गारमेंट्स दैट इज़ एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, वैन यूजन, ये सब आदित्य बिरला ग्रुप के ब्रांड्स इस कंपनी में रहेंगे। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव प्रॉफिट की कंपनी है। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल एंड फैशन का लिस्टिंग फोकस में रहेगा। कमिंग टू द मेजर ब्लॉक डील्स दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे, सो साई लाइफ साइंसेज, द प्राइवेट equity firm TPG Asia sold 10% stake and the buyers were all the mutual funds and insurance companies. So Nippon Mutual Fund bought 2.4%, Birla Sun Life Mutual Fund bought 1.3%, Max Life and Axis Max Life Insurance bought 0.7% each. So good companies finding buyers at in the block deals. Also, SG Finserv Bandhan Mutual Fund bought 1.6% stake, while Sahil Gupta was the seller of 2.2% stake. India Cements Franklin Templeton Mutual Fund bought 0.7% stake. Northern Arc Capital, we saw 361 Special Opportunities Fund selling 4.6%, and even other series fund of 361, that series 5 fund sold 3.8% stake, while the buyers were BNP Paribas 0.5% and Madhu Kela bought about 0.6% in Northern Arc Capital. Vishal Megamart also, we saw Vanguard two index funds buying 0.5 and 0.6% stake respectively in Vishal Megamart. Among promoter buying and selling, so promoter buying was observed in Jindal Stainless and DB Corp, और promoter selling देखा गया NCL Industries, Ultramarine Pigments and Salazar Techno में। So friends, this was all about the morning podcast today. Thank you for listening. Have a happy trading session. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.